Today we are going to talk about validation rules. Okay, so कल हम लोगों ने MVC स्ट्रक्चर देखा था, MVC आर्किटेक्चर देखा था, जिसमें हम लोगों ने मॉडल्स के बारे में पूरा कंप्लीट पोर्शन कवर अप किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंट्रोलर्स. Okay, and that controller is basically relevant with this validation rules. Okay, so what are the different validation rules are there, what is mean by validations? Okay, that is the thing which we are going to cover in today's lecture. So what is validation? uh, Validation helps to improve the data quality by preventing a user from entering incorrect data. सपोज करो आपके एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपके पास में डेटाबेस है उसमें एक प्रॉपर वैलिड डेटा आपको लाना है. ओके, और यूजर क्या करता है, यूजर बेसिकली इंटरफेस यूज करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और उसका यूज करके वो डेटा एंट्री करता है. तो जो डेटा एंट्री यूजर आपके पास में कर रहा है वो प्रॉपर और वैलिडेट डेटा है या नहीं है, ये चेक करने का काम कौन करता है, ये वैलिडेशंस करते हैं. ओके, वैलिडेशन रूल दैट कैन a formula or expression that evaluates the data in one or more fields and return a value true or false. Okay, so ये क्या करता है, एक फॉर्मूला अप्लाई करेगा, चेक करेगा whether the expression or the value is correct or not, and depend upon that it will return the value true or false. And we can display the error message. If there is an error, then we can able to display the error message. For example, हम लोग ATM में जाते हैं with our ATM card. तो सबसे पहले जब एटीएम कार्ड एंटर करते हैं तो वो हमको पूछता है पासवर्ड. ओके, एंड देन व्हेन वी एंटर द पासवर्ड, तो वहां पे वैलिडेशन लगता है. इट विल चेक वेदर द पासवर्ड इज वैलिड और नॉट, और योर पिन कोड इज वैलिड और नॉट. ओके, और वो वैलिडेशन करने के बाद में अगर करेक्ट है तो फिर आप तो आपको अलग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे लेके जाएगा. अगर वो रॉन्ग है तो आपको मैसेज दिखाएगा कि रॉन्ग पिन. ओके, फिर आप सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करते हो, थर्ड टाइम अटेम्प्ट करते हो. Okay, and all this validation is comes to an action. So basically Salesforce provide you two type of validation. One is your standard validation and second is your custom validation. Okay, now what is in my standard validation? uh, Standard validation are those validation which is provided by the Salesforce itself, right? So there are basically four type of validation which is Salesforce is actually going to provide you. पहला होता है mandatory field validation. So what is mandatory field validation? आप required करते हो, जब भी आप field create करोगे तो आप required करते हो. If you put this field as a required, तो वो data उसने enter करना ही चाहिए. ओके, इफ दैट डेटा इज नॉट एंटर देन वो आपको एरर देगा. लेट्स सी वेदर वी कम अक्रॉस दिस मैंडेटरी वैलिडेशन. सो गो टू योर एप्लीकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने मैंडेटरी वैलिडेशन अप्लाई की हुए. गो टू योर कोर्स. ओके, एंड जस्ट क्लिक ऑन न्यू. once you click on new, you can see the red color star mark over here, and that denotes it is the mandatory field. If you try to save this data, now you can see the error message is come up over here that complete this field. So what it denotes, it is a mandatory field. This validation is actually provided by the Salesforce itself. Okay, तो हम लोगों को क्या करना होता है, सिर्फ सिलेक्ट करना होता है कि ये वैलिडेशन हमको अप्लाई करना है कि नहीं करना है. Then second validation आता है data type validation. Okay, so how will you check the data type validation? For that I need to go to the setup. First of all, I will show you how you are going validate the data type. Okay, or how the data type validation provided by the Salesforce. Just go to the object manager. I'm going to search for the course object. Okay, fields and relationship. Now you can see course name. इसका क्या दिया है, कोर्स नेम, डेटा टाइप दिया है टेक्स्ट. अब
जब हम लोग कोर्स में जाते हैं, न्यू फील्ड क्रिएट करते हैं, और कोर्स नेम को अगर मैं नंबर देने की कोशिश करूँ, तो इसका डेटा टाइप है टेक्स्ट, और इसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं, नंबर। तो जब ऐसा कोई डेटा जाता है तो देखो वापस एरर आया, क्या आया, रिव्यू द फॉलोइंग फील्ड्स। ओके, सो व्हाट इट डिनोट्स कि दिस पर्टिकुलर डेटा इज नॉट अलाउड, राइट, ये डेटा अलाउड नहीं है। तो this called data type validation. It is a pretty simple validation. अगर आप इंटीजर लिखते हो तो स्ट्रिंग वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो, अगर डेसिमल लिखते हो तो इंटीजर वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो। सिमिलरली, जो डेटा टाइप उस पर्टिकुलर फील्ड को असाइन है, उसके अलावा अगर आप डिफरेंट टाइप का डेटा उसको पास करोगे तो वो इनवैलिड करेगा, वो वैलिडेट करेगा उस डेटा को। फिर आता है डेटा विड्थ वैलिडेशन। Okay, now you can go to your pass side once again. Now you can see we have a course fee currency with length of 6 digit. Okay, मतलब आप किसी भी कोर्स की फी 6 डिजिट तक आप रख सकते हो, 6 डिजिट से ज्यादा आप कोर्स की फी नहीं रख सकते हो। लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ field over here. Let's add a name, let's say HTML. Okay, and the mandatory field is this, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड अब यहाँ पे कोर्स फी है, लेट्स ऐड 8 डिजिट कोर्स फी, 1 2 3 4 5 6 7 8। डू यू थिंक is it going to accept by this Salesforce? Okay, so let's try to save this. Now you can see course fee value outside of valid range on numerical field. What it denotes? It denotes कि आपने क्या किया है, इसकी डेटा लेंथ स्पेसिफाइड किया था 6 डिजिट की, और आप इसमें वैल्यू असाइन कर रहे हो 8 डिजिट की। दैट इज नॉट अलाउड, and it is going to validate by using this data width validation. So these are the things which actually going to be provided by the सेल्सफोर्स इटसेल्फ। और फिर इसमें एक और होता है, दैट इज यूनिक कंस्ट्रेंट वैलिडेशन। यूनिक कंस्ट्रेंट यानी कि अगर आप ईमेल आईडी ले रहे हो, ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू स्टूडेंट्स, लेट्स क्लिक ऑन न्यू। नाउ वी हैव अ स्टूडेंट ईमेल आईडी एंड वी नो दैट ईमेल आईडी मस्ट नॉट बी डुप्लीकेट। ओके, तो क्या होगा, मस्ट नॉट बी डुप्लीकेट, क्रिएट क्लियर। तो वहां पे ये वैलिडेशन अप्लाई होगा। कौन सा वैलिडेशन अप्लाई होगा, यूनिक कंस्ट्रेंट वैलिडेशन। एंड टू अप्लाई दैट वैलिडेशन, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गो टू योर ऑब्जेक्ट मैनेजर। ओके, पहले चेक करना पड़ेगा कि वेदर वी अप्लाई दैट वैलिडेशन और नॉट। देन क्लिक टू द स्टूडेंट फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, एंड बेसिकली हम लोग ईमेल पे या फिर मोबाइल नंबर पे कहीं पे हम लोग वो वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो गो टू योर स्टूडेंट ईमेल आईडी, लेट्स एडिट दिस, let's edit this field, and I'm going to apply this unique constraint over here. Now to apply this unique constraint, तो इधर आप देखो यूनिक नाम का ये चीज आया है, इसको क्लिक करोगे, सो डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, ये कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गया। यू जस्ट क्लिक ऑन सेव, तो ये जो फोर्थ कंस्ट्रेंट है हमारा यूनिक कंस्ट्रेंट, ये उस पर अप्लाई हो जाएगा। नाउ जस्ट गो टू देयर, लेट्स आई एम गोइंग टू कॉपी दिस, ताकि ये डुप्लीकेट हो जाए, है ना। तो डुप्लीकेट हो जाएगा तो एक्चुअल में हमको समझेगा कि वेदर द कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड प्रॉपरली और नॉट। नाउ लेट्स गो टू द न्यू, add some name, let's say Harish, and paste this duplicate email ID over here to check whether, let's have a password 1 2 3 4 5, rest of the thing is not mandatory। let's check whether the error is given or not, क्योंकि ये duplicate value है। okay, so we need to check that, and to that we need to click on save। now you can see we get a error message that duplicate value found। ओके, सो ये क्या है, ये भी एक वैलिडेशन है जो सेल्सफोर्स खुद होके प्रोवाइड करता है। सो व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ वैलिडेशन सेल्सफोर्स हैज प्रोवाइडेड, और व्हाट आर द स्टैंडर्ड वैलिडेशंस आर देयर। फर्स्ट वन इज द मैंडेटरी, second one is data type validation, third is data width validation, fourth is unique constraint validation। okay,
So these are the four different validations or the standard validations present in a Salesforce. Now let's talk about the custom validation. कस्टम वैलिडेशन यानी कि ऐसा वैलिडेशन जो हम लोग अप्लाई करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड. So for that we need to use a formula, okay, and we need to specify the error condition. वो formula calculate करेगा वो particular condition को evaluate करेगा. If that condition is true तो error message आएगा, false तो validate हो जाएगा, right? तो आप अपने खुद के validation rules लिख सकते हो Salesforce के अंदर. Now consider one example. If you talk about the age of the person, okay, so how could you validate the age of the person? Okay, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एज कैसे वैलिडेट करें. If I am going to create a hospital management system, so what would be the age where validate in hospital management system? तो वहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज भी होते हैं. सो न्यूबॉर्न बेबीज का एज क्या होगा? जीरो होगा. ओके, सो जीरो इज द वैलिडेट एज फॉर द हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम. लेकिन अगर वही आप फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए जाओ एयरलाइंस पे, so what is the validate age? If the particular child is greater than 3 years तो वहाँ पे टिकट लगती है, नहीं तो नहीं लगती है. So what is the valid age for the airlines? It is 3 years. Okay. Similarly वापस से बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम में अगर हम रेलवेज की तरफ टर्न अप करें तो रेलवेज कहता है कि 5 साल से ज्यादा अगर है तो टिकट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा. So what is the validate age in that particular application is 5 year. फिर अगर हम लोग बोले कहे कि व्हाट इज द और एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम अगर हम लोग क्रिएट करें तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए क्या वैलिडेट रूल होगा? इट शुड बी ग्रेटर देन 18 years. सो वैलिडेट एज फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज 18 year. तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए अलग जा रहा है, एयरलाइन बुकिंग के लिए अलग जा रहा है, देन रेलवे बुकिंग्स के लिए अलग जा रहा है, एंड नाउ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अलग जा रहा है. वेयर एज अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, सो व्हाट इज द वैलिडेट एज इन सीनियर सिटीजन? it should be a 60 greater than 60 years, right? So age is validated differently according to the different business purpose, okay, and that cut to uh, relevant with the custom validation. Why? Because स्टैंडर्ड वैलिडेशन के अंदर ये सारी चीजें नहीं आ सकती क्योंकि उसको पता नहीं है. स्टैंडर्डाइजेशन में ये चीजें आप नहीं डाल सकते कि कौन से एप्लीकेशन के लिए कौन सा एज फैक्टर मायने रखेगा. ओके, सो वो आपको कंसिडर करना है और उसके अकॉर्डिंग टू फिर आप अपने खुद के कस्टम वैलिडेशंस को नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, राइट? Why custom validation? Standard validation can checks only the platform related parameters. Okay, whereas custom validation are used for checking the validation of a business constraint. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द बिजनेस द एज फैक्टर इज चेंज, उसका वैलिडेशन चेंज हो रहा है. ओके, सो बिजनेस कंस्ट्रेंट को चेक करने के लिए आपको क्या करना है? कस्टम वैलिडेशंस को यूज करने का है. So this is all about the validations. Okay, now let's go and let's try to create our own custom validation. Okay, and to do that हम custom validation लगाएंगे course नाम के ऑब्जेक्ट में, where जब ये कोर्स एंटर किया जाएगा, ओके, तो क्योंकि कोर्स का ड्यूरेशन हम लोग एंटर कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि दैट कोर्स ड्यूरेशन नॉट ग्रेटर देन 99. ओके, और यू कैन से दैट 99 बोलने से अच्छा ऐसा करो, दूसरा कंस्ट्रेंट लगाते हैं, दैट कोर्स ड्यूरेशन नॉट लेस देन 10 आवर्स. तो 10 आवर्स से ज्यादा ही कोर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए, उससे छोटा कोर्स हम लोग अलाउड नहीं करेंगे. ये क्या है? ये हमारे बिजनेस का कंस्ट्रेंट हो गया अभी. So to apply the business constraint as a validation rule, you have to use a custom validation. And to do that, go to your past side. Okay, go to your object manager, then go to your course object, right? Just go to your course object and search for the validation. Okay, now here at the bottom on your left hand side you can see a validation. Okay, so you need to click on validation rules.
Now there is no validation rule as such defined over here for a course object. अभी हम हमारा खुद का validation rule लिखेंगे यहाँ पे. Let's click on new and let's give the name to this particular validation called minimum hours duration. So I had given the rule name, that is minimum hour duration. Okay, let's scroll down. Then here you can see error condition formula. You need to define error condition formula. Okay, and ये इंटरफेस के बारे में आप जानते हो. दिस इज द फॉर्मूला इंटरफेस. बट ये फॉर्मूला अभी आपको ट्रू और फॉल्स ये फॉर्म में आपको आंसर देगा. ओके, यू कैन रीड दिस. इफ दिस फॉर्मूला एक्सप्रेशन इज ट्रू, डिस्प्ले द टेक्स्ट डिफाइंड इन द एरर मैसेज. इसका मतलब क्या है? अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको एरर दिखाने का है. इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, देन यू आर एक्सेप्ट दोज डेटा. Okay, so we are going to apply the custom validation. So how will you apply the custom validation? So I am going to select the field. अब हमको field कौन सी चाहिए? Duration in hours. So we apply validation on duration in hour. That should be greater than 10. Okay, if the value is provided less than 10, then error message will be given. If the value is greater than 10, then that course is going to be accepted by us. Okay, so we apply a validation over here. See that duration hour must be greater than 10. Let's click on check syntax and check whether is there any error or not. Now you can see no error found. It means we write a correct rule. Now at the bottom you can see a error message. Okay, so what sort of message you want to display with that? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो course duration must be greater than 10 hours. Okay, or you can do like this, greater than or equal to भी कर सकते हो. तो 10 या 10 से ज्यादा. So you can say the course duration must be more than 10 hours. Okay, नाउ ये जो एरर आएगा, ये एरर आपको किधर शो करने का? ये पूछेगा एरर लोकेशन. अगर आपको वो एरर टॉप पे चाहिए, देन यू कैन सिलेक्ट दिस वन. अगर आपको वो एरर उस फील्ड से रिलेवेंट चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करो. ओके, अब सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आपने वैलिडेशन अप्लाई किया और सेव पे क्लिक किया है तो ऊपर एरर आ जाएगा, लेकिन आपको वो फील्ड पर्टिकुलरली फील्ड आपको सर्च करनी पड़ेगी कौन से फील्ड पे एरर आ रहा है. अगर आप वो फील्ड पे एरर दोगे तो यूजर को स्पेसिफाइड होगा, अच्छा ये पर्टिकुलर फील्ड पे एरर आ रहा है तो वो उस फील्ड पे काम कर सकता है. नाउ ये एरर कौन से फील्ड पे डिस्प्ले करनी है हमको? ये एरर हमको ड्यूरेशन इन हावर्स ये फील्ड पे डिस्प्ले करने के लिए. लेट्स क्लिक ऑन सेव. Now you can see your validation rule has been created successfully with a name minimum hours duration. Let's try to check this particular validation rule in a SaaS site. Now, what I'm going to do, I'm going to edit this field 30 to 9 hours. Okay, and let's try to save this and see what will be the error. Okay, let me refresh this first of all. Let's go to your course. Let's open Salesforce Admin. Click. Let's have the value 8 and let's try to save this. Oh, एक काम करते हैं, न्यू कोर्स ऐड करके देखते हैं. Let's add a new course. Let's say JSS. Duration is 8. Okay, and the trainer is
Thompson. Let's click on save. Okay, I might be okay. ये एक्टिव करना था तो ये एक्टिव भी किया हुआ है हम लोगों ने वैलिडेशन रूल. It is active. Okay, so it's fine. Duration is greater than equal to 10. Okay, let ये मैंने गलत किया यहाँ पे. ड्यूरेशन इज लेस देन और इक्वल टू 10. ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो आपको एरर मैसेज आएगा. बेसिकली मैंने कंडीशन गलत लिखा था वहाँ पे. नाउ लेट्स गो एंड वंस अगेन ट्राई टू चेंज दिस डेटा फ्रॉम 8 to 9 and let's try to save this. Now you can see the error has been come that course duration must be more than 10 hours. Okay, so this invalid data is not going to allow to enter into the Salesforce org by using the custom validation. Okay, you can see that error has been hitted over here with an error message. So whatever the error message we define, ओके वो एरर मैसेज क्या एरर मैसेज था. द कोर्स ड्यूरेशन मस्ट बी मोर देन 10 आवर्स. सेम एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया. इफ यू ट्राई टू सेव विद द value which is greater than 10, then you can see it simply allow you to save the data. So by using this method you are supposed to create your custom validation. Now you can apply a different custom validation on a different object, different fields, depend upon your application need. तो आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे एप्लीकेशन में कौन से फील्ड पे कौन सा वैलिडेशन अप्लाई होगा. ओके, वो आप नहीं सोचते हो. बेसिकली आपको क्या करना होता है, जिसका भी एप्लीकेशन बना रहे हो, जिस भी बिजनेस के लिए आप ये एप्लीकेशन बना रहे हो, उसके साथ में थॉरो डिस्कशन करना पड़ेगा. जितना ज़्यादा डीप आप उसके साथ में जाओगे डिस्कशन में, उतना ज़्यादा आपको ये वैलिडेशंस कहाँ पे क्या लगाना है वो कम अप होते जाएंगे. बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी वर्क एज अ क्या बोलते सर्विस प्रोवाइडर, और अगर हमारा क्लाइंट के साथ में प्रॉपर डिस्कशन नहीं होगा तो क्लाइंट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट हमको नहीं पता चलेगी. क्लाइंट खुद होके कभी भी आपको जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट वो नहीं देगा. वो पहले कुछ और बोलेगा, फिर आप क्या करते हो, कुछ प्रोडक्ट बना के देते हो, फिर वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा भी करके दिखाओ, ऐसा भी करके दिखाओ, और फिर लास्ट में बोलता है कि हर चीज़ आपको बतानी पड़ती है क्या. सो ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है. सो यू नीड अ थॉरो डिस्कशन. ओके, तो इनिशियल डेज में शायद ऐसा होता है, तो आपको थॉरो डिस्कशन के लिए जाना पड़ता है एकदम. बट बीइंग एन प्रोग्रामर, जब आप वर्क करते हो एक बड़ी कंपनी में, अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव द मैनेजर, टीम लीड्स फॉर दैट. वो डिस्कशन करके ये सारी चीज़ें लेके आते हैं और देन यू नीड टू अप्लाई ऑन इट. सो दिस इज ऑल अबाउट द वैलिडेशन रूल्स. Now let's talk about a few things, like go to your trainer object. मैं भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. Let's click on new. Now I want to create a new trainer. Okay, now here you can see I have the section called address, where I am going to take a country of that particular trainer and the state belongings to that country. Now अब इधर देखो, रशिया सेलेक्ट करने के बाद में भी एपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, ये सारी चीजें आ रही है. ओके, तो ये चीजें हमको नहीं चाहिए. हमको क्या चाहिए, वी नीड states which belongs to the Russia. Okay, and we need that state to be displayed over here, right? And to do that, we have something with us, and that is called field dependency. And to apply a field dependency, what you need to do, you need to go to your ऑब्जेक्ट मैनेजर वंस अगेन. अब देखो कौन से ऑब्जेक्ट पे हमको फील्ड डिपेंडेंसी अप्लाई करने का है. ट्रेनर ऑब्जेक्ट पे फील्ड डिपेंडेंसी अप्लाई करना है. दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाने के बाद में यू नीड टू सर्च फॉर द ऑब्जेक्ट कॉल्ड ट्रेनर. लेट्स क्लिक ऑन ट्रेनर, then let's search for the field dependency, and to do that go to your fields and relationship. Okay, and here on the right hand top most corner you will find field dependency.
ओके दिखाई दे रहा है सबको फील्ड डिपेंडेंसी? हैव यू सीन? यस। ओके अब क्या करेंगे, ये फील्ड डिपेंडेंसी पे क्लिक करेंगे टू अप्लाई अ फील्ड डिपेंडेंसी। कौन सी फील्ड किसके ऊपर डिपेंड है? नाउ वी डोंट डिफाइन एनी फील्ड डिपेंडेंसी ओवर हियर, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट वन डिपेंडेंसी। सो फॉर दैट आई नीड टू क्लिक ऑन न्यू। न्यू पे क्लिक करने के बाद में अब बताएगा कि कंट्रोलिंग फील्ड कौन सी है और डिपेंडेंट फील्ड कौन सी है। तो इधर आप देख सकते हो व्हेन आई वांट टू क्रिएट अ ट्रेनर, तो इधर आपकी मेन फील्ड कौन सी होगी? कंट्री, और इसके ऊपर डिपेंड कौन होगा? स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंट्रोलिंग फील्ड हो गई मेरी कंट्री एंड डिपेंडेंट फील्ड हो गई मेरी स्टेट। तो ये इधर कंट्री और स्टेट ये नेम जो है वो कहाँ से आए? वो ऑटोमेटिकली पिकअप किए बाय पिक लिस्ट। तो आपने फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में पिक लिस्ट जो बनाई होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होगी। सो कंट्रोलिंग हो गया कंट्री, डिपेंडेंट हो गया स्टेट। सो लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू to create a field dependency. Now you can see field dependency is written over here. Okay, and you need to select the field dependency according to that. Now you can see we have India, Andhra Pradesh, Maharashtra, MP, Telangana, UP. So these are the state are repeated for each and every कंट्री। बट ये ऐसा नहीं चाहिए हमको, हमको रशिया के फील्ड्स अलग चाहिए, साउथ अफ्रीका के अलग चाहिए, यूके की अलग चाहिए और यूएसए की अलग चाहिए, राइट? सो टू डू दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, I need to include some values into these fields. Okay, so let's click on include values. So it says select at least one of the same. Okay, so control से इसको select किया, now click on include. Okay, so ये क्या हुआ अभी रुको मैं बता देता हूँ आपको। सो इंडिया, एपी, महाराष्ट्र, एमपी, तेलंगाना एंड यूपी। सो ये मैं सिलेक्ट करके इंक्लूड वैल्यूज किया तो क्या हुआ कि ये वैल्यूज इंक्लूड तो हुए लेकिन किसके लिए? इंडिया कंट्री के लिए इंक्लूड हुए। बट वी डोंट सी एनी वैल्यू रिलेवेंट विद द रशिया, ऐसे यूके एंड अदर थिंग्स। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फिलहाल के लिए इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ओके फिलहाल का इसके लिए सेव कर लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू ऐड वैल्यूज इन अ स्टेट। तो कौन से रशिया के अंदर कौन से स्टेट है वो ऐड करेंगे, यूएसए के अंदर कौन से स्टेट्स है वो ऐड करेंगे। एंड टू डू दैट व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू जस्ट सिंपली गो टू फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, फिर स्टेट पे क्लिक करने का है। स्टेट पे क्लिक करने के बाद में इधर आप देख सकते हो कि कौन से वैल्यूज हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किए हैं। Now you can see AP, Maharashtra, MP, Telangana and UP. These are the values that we usually added over here. Now I am going to add few more values. For adding the values, what I need to do, I need to simply click on new button present over here. So just click a new button to enter new values. So simply I need to enter some values relevant with the country called Russia. Okay, Astra Khan. ओके देन नेक्स्ट आता है बेल वो ओके। और अभी यूएसए के लिए कुछ स्टेट्स हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से कैलिफोर्निया, ओके देन टेक्सास, देन फ्लोरिडा। सो दीज आर द स्टेट्स which is belongs to यूएसए। एंड देन नेक्स्ट एक और कंट्री हमारे पास में यूके, उसके लिए हम लोग ऐड कर लेते हैं। बेसिकली इधर स्टेट्स कम है तो स्कॉटलैंड एंड वेल्स। okay so these are the states which I need to be included in a state field. So just click on the save. Now you can see this much number of
states now being added into my state pick list. अब क्या करेंगे, वापस fields and relationship में जाएंगे, क्योंकि अभी हमको कंट्री वाइज स्टेट को असाइन करने का है। एंड टू डू दैट आई नीड टू क्लिक ऑन फील्ड डिपेंडेंसी वंस अगेन। इधर हमने ऑलरेडी एक फील्ड डिपेंडेंसी क्रिएट किया था, बस उसको ही हमको एडिट करने का है, सो हम उसको एडिट करेंगे। ओके, एडिट करने के लिए अभी हमारे पास में बहुत सारे स्टेट्स आ चुके हैं। नाउ वी नीड टू असाइन अकॉर्डिंग टू दैट। नाउ देखो, इंडिया के लिए हमने ये असाइन कर लिए हैं, रशिया के लिए ये दो चीजें असाइन करेंगे। देन साउथ अफ्रीका के लिए तो ऐड ही नहीं किया था, चलो ठीक है, ऐड कर देंगे। यूके के लिए कौन से कंट्रीज, सॉरी स्टेट्स हमने लिखे थे, वन था स्कॉटलैंड, दूसरा था वेल्स, इसको इंक्लूड कर लेंगे। और यूएसए के लिए हमने लिखा था कैलिफोर्निया, then we write Florida, and one we write Texas. So we include all those states over here. Let's click on save once again to save these values. Yes, sir. Then just go to your SaaS site, that is your training management system application. Just refresh this, go to your trainer, click on new to create a new trainer, and let's see whether this field dependency applicable or not. Now you can see the state is grayed out from here. Okay, और इधर लिख क्या है, व्यू ऑल डिपेंडेंसी। तो इधर से आप डायरेक्टली स्टेट नहीं चूज कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सिलेक्ट द कंट्री। if I choose India as a country, then you can see the state appear over here, that is AP, Maharashtra, MP, Telangana and UP. If I change the country from India to Russia, now you can see the relevant state is now being available over here. If I change from Russia to UK, now once again you can see the state belongings to the UK, and then USA के लिए USA के states यहाँ पे show हो गए. Okay, so in that way you are able to apply the field dependency between the two things. Okay, and चलो एक ट्रेनर ऐड कर लेते हैं, लेट्स से राजेश कुमार, trainer number is 1, trainer email ID is rajesh121@gmail.com. The next field आती है country. Let's select the country, that is USA, California, चलो रहने दो। Qualification is BE and experience is, let's say, 4 years of experience. Let's click on save. Now you can see that particular trainer has been added with country called USA and state called California. What if I want to change the country? Okay, तो जैसे ही मैं कंट्री चेंज करता हूँ फ्रॉम यूएसए टू इंडिया, नाउ यू कैन सी स्टेट हैज बीन चेंज, तो यहाँ पे नन लिख के आ गया। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सिलेक्ट द स्टेट। सो कंट्री के साथ साथ स्टेट सिलेक्ट करना मैंडेटरी हो गया है यहाँ पे, एंड देन you need to click on save. Now you can see according to the country the state has been changed over here. So this is all about the field dependencies. Okay, अब इधर थोड़ी छोटी छोटी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि फील्ड डिपेंडेंसी तो हमने क्रिएट कर लिया है, बट व्हाट इफ आई वांट टू रिमूव सम नेम्स फ्रॉम द फील्ड कॉल्ड स्टेट्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाएंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द ट्रेनर ऑब्जेक्ट, उसमें हमने कहा गए हम लोग फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में। अब मैं क्या करूंगा, स्टेट पे जाऊंगा। ओके, एंड आई आई थॉट कि आंध्र प्रदेश ये जो स्टेट है, ये स्टेट फिलहाल का मुझे नहीं चाहिए मेरे लिस्ट के अंदर। सो आई हैव अ डीएक्टिवेट बटन ओवर हियर। इफ यू क्लिक ऑन दिस डीएक्टिवेट बटन, व्हाट हैपन, योर आंध्र प्रदेश स्टेट हैज बीन डीएक्टिवेटेड। और आप नीचे देख सकते हो डीएक्टिवेटेड और अनयूज वैल्यू में वो चला गया है, एंड एक्टिव वैल्यूज में वो प्रेजेंट नहीं है। इफ यू गो टू योर ट्रेनर साइट एंड जस्ट सिंपली रिफ्रेश दिस,
and you want to change, if you change this India to Russia and Russia to India, now if you go there, now you can see हमने कौन सा स्टेट रिमूव किया था, आंध्र प्रदेश आई थिंक. Go to your trainer, start changing. I need to refresh this. It took some time na to reflect those things. So new पे गए, इधर गए कंट्री के अंदर, कंट्री चूज किया इंडिया, एंड लेट्स सी वेदर द आंध्र प्रदेश इज अपीयर और नॉट. So you can see Andhra Pradesh is not there. Andhra Pradesh has been deactivated from the list. Okay, so in that way you are supposed to add और रिमूव द वैल्यूज. ओके, डायरेक्ट डिलीट भी कर सकते हो, पूरा रिमूव करना है तो, लेकिन एक्टिव और डीएक्टिव ऐसा आप कर सकते हो. इफ यू वांट टू मेक दिस फील्ड वंस अगेन एन एक्टिव, देन यू हैव अ एक्टिव बटन ओवर हियर, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट. तो ये वैल्यू एक्टिव हो जाएगी फॉर द पिक लिस्ट. ओके, सो आप इस तरह से पिक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो. सो दिस इज द one major thing which I need to be explained to you. Now let's talk about pick list. Okay, let me search first of all pick list. Okay, pick list value sets. Now what is this pick list value sets? This pick list value sets is basically relevant with your global pick list. ओके, इधर आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल पिक लिस्ट बना सकते हो. अब सपोज करो आपका जो एप्लीकेशन है उसमें आपके पास में 5 टैब्स है, और पांचों टैब में, पांचों ट्रांजेक्शन में कंट्री आप यूज कर रहे हो, स्टेट्स आप यूज कर रहे हो. तो कंट्री की वैल्यूज इधर भी आपको स्पेसिफाइड करनी पड़ेगी अलग से फील्ड बना के, इधर भी स्पेसिफाइड करनी पड़ेगी अलग से फील्ड बना के, इधर भी स्पेसिफाइड करनी पड़ेगी अलग से फील्ड बना के. इफ यू गो टू योर स्टूडेंट्स, okay, and if you click on new, you can see we have already been created country and state, right? ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है. अब देखो, similarly if you go to trainer, if you click on new, you can see we also created country and state over here, right? तो इसमें हमको एक ही चीज बार बार करनी पड़ती है, and to avoid that we use a global pick list. And to do that हम लोग जाएंगे पिक लिस्ट वैल्यू सेट्स में. पिक लिस्ट वैल्यू सेट्स में जाने के बाद में हमको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन न्यू टू क्रिएट अ न्यू पिक लिस्ट एंड गिव सम नेम. लेट्स से यहाँ पे जो भी पिक लिस्ट में आपको चाहिए, लेट्स से क्लास में हम लोग जाते हैं तो सेक्शंस रहते हैं. सो सेक्शन ए से बिलोंग कर रहा है, सेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है, सेक्शन सी से बिलोंग कर रहा है. सो दिस इज द कॉमन थिंग विच वी वांट फॉर एवरी ब्रांच. सो आईटी है उसमें भी ब्रांचेस, वो ब्रांच में भी नंबर ऑफ सेक्शंस रहेंगे, कंप्यूटर में भी सेक्शंस रहेंगे, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेक्शन रहेंगे. तो सेक्शन इज द कॉमन थिंग बिटवीन ऑल द ब्रांचेस. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पिक लिस्ट फॉर अ सेक्शन, and I'm going to assign some values over here. Let's say section A, section B, section C, section D, section E, section F, section G. Okay, that's all. And just save this. Now you can see this global pick list with a name section has been created over here. Now if I want that particular section in a student object, okay, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में जाएंगे सबसे पहले. ओके, गो टू योर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट. बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ग्लोबल पिक लिस्ट सेक्शन नाम से आपने बनाई वो यूज कैसे करने का. एंड टू डू दैट पहले जाएंगे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में, और इधर हमको लगेगा सेक्शन नाम का पिक लिस्ट की कौन से सेक्शन से ये स्टूडेंट बिलोंग कर रहा है. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फील्ड फॉर दैट, दैट इज अ न्यू फील्ड. और कौन सी फील्ड रहेगी, दैट फील्ड इज योर पिक लिस्ट. ओके, एंड देन यू नीड टू click on next button. Now you need to specify the name called section. Now you have that option called use a global pick list value set. Okay,
So rather than entering all those values, repeat again and again, we are directly use this global pick list from here. Now you can see section pick list is now available. If you click on it, then the whole values relevant with that is automatically fetched and available over here. Now you just need to click on next. Then you need to add the visibility only to the system administrator. Then click on next. And then finally you need to click on save to create that particular field. Now we have that field with data type called pick list, but the value uh, relevant with that pick list is now fetched from the global pick list. अब क्या करेंगे, इधर आएंगे, वापस स्टूडेंट में जाएंगे, लेट्स रिफ्रेश दिस एंड सी whether that value is reflecting or not. हमने अभी कोई वैल्यू एंटर तो नहीं किया था. So let's click on new. Now at the bottom you can find a pick list called section. If you click on it, you can see the value A, B, C, D, E, F, G, H. So these are the sections which is specified in the global pick list. उधर से हमने क्या किया है, इसको लिंक अप किया है, राइट. तो अब सपोज करो 10 पिक लिस्ट 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट में है और सेक्शन चेंज हो गए. ए बी सी डी से अभी हमने किया बीई ए, बीई बी, बीई सी, बीई डी, बीई एफ, नॉमेनक्लेचर चेंज कर दे. तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 अलग अलग फील्ड्स में जाके वो वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा. सो रेदर देन डूइंग दैट, हम एक ग्लोबल पिक लिस्ट बनाएंगे जो रेफर करेगा 10 ऑब्जेक्ट. तो ग्लोबल पिक लिस्ट में वैल्यू चेंज, तो 10 टोटल 10 फील्ड के अंदर और 10 ऑब्जेक्ट के फील्ड्स के अंदर की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. नाउ लेट्स ट्राई टू डू दैट, एंड टू डू दैट वी नीड टू गो टू योर होम, go to your pick list value sets. We already been created a pick list with a name called section. You just go and edit the values, and to do that need to click on edit. Okay, so let me check what are the options there. So you need to click on section first of all. When you click on section, at the bottom you can find the uh, values present over here, and you can edit these values, okay, by clicking on the edit option present over here. And you can change the value of a to, let's say, b tech a, like this, and you just need to click on save. So once you change that value is automatically reflected to the values where we assign this global pick list. Okay, so इधर आप रिफ्रेश करो इसको, तो चेक कर लो बीटेक ए आया है कि नहीं आया. एंड टू डू दैट, just click on the new in a student object, and at the bottom somewhere we found our section. And if you click on that, you can see instead of a we have a section called btech a. So this is all about the global pick list. So that's all from my side. So I'm going to stop over here.